Children, before I start my video, I just want to tell you that everything is given in your textbook, alright? जो आपका theoretical portion है, जो आपको written theory में लिखना होता है, everything is given there, so don't get confused. यहाँ पर आप अच्छे से इसको समझो, understand it properly. What is the concept actually? सिर्फ flow charts आपको explanatory form में नहीं दिए हैं वहाँ पर, वो आप note down करो, but otherwise अच्छे से समझना है आपको, बाकी चीज़ें आपको textbook में भी मिल जाएंगी, alright? Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are good. Alright, so today we are going to study our next topic of the same chapter, that is phosphorylation. Alright, actually in the last topic or yesterday हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट लाइट रिएक्शन. ऑलराइट, हमने किया था लाइट रिएक्शन जिसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किया. ओके, लाइट रिएक्शन अकर्स वेयर in the chloroplast. Okay, in the presence of the sunlight, photosynthesis process takes place. Okay, and in that chloroplast we have thylakoids, और जो thylakoids होते हैं उसमें क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन हो रहा है. ओके, वो सब चीज़ें हमने की थी कल. And then you also studied, if you remember, then that during the light reaction some of the things happens, and at last what is forming? ATP, all right, and NADPH. Okay, these two energy boosters are formed at the end. all right, so जो ATP बनता है, ATP synthesis या ATP formation जो होती है वो कैसे होती है, कब होती है, whatever the process involves in the formation of ATP, that we are going to study today. So आज का लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, और एक स्टेप भी आप मिस करते हो तो आपको पूरी चेन समझ में नहीं आने वाली है. ऑलराइट, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ सकते हैं कि कैसे हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है. ऑलराइट, सो हियर वी गो. नाउ फ्रेंड्स, the next topic is phosphorylation. First of all, you should know this phosphorylation word, what it means actually. So phosphorylation is ATP synthesis formation. It is a kind of a process where ATP is formed. Okay, अब फंडा ये है कि ATP है क्या चीज़ है. ओके, अब ATP क्या होता है? ATP और ATPs आर दी मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी, जिनको हम तभी मैं आपको बोलती हूँ कि ATP हम एनर्जी बूस्टर्स बोलते हैं. ऑलराइट, और एनर्जी करेंसीज बोलते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी. अब वो जो एनर्जी है उसका क्या करना है? उस एनर्जी को दैट ATP provides energy to drive processes. What are those processes? अगर आप एनिमल्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कितने सारे सिस्टम्स हैं. ओके, उसमें एनर्जी जानी है. ऑलराइट, एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स इन्वॉल्व देयर. ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, शुगर, मिनरल, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सो मेनी प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस. सो उस सब चीज़ों के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए ना. हर चीज़ को एनर्जी चाहिए, काम कैसे करेगा वो? ऑलराइट, सो ATP इज देयरफॉर यूज्ड देयर, but it has a proper funda or phenomena by which it is produced. So वही हम चीज़ आज डिस्कस करेंगे. अब देखिए, एक सिंपल सा फंडा है. सी, फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो क्लोरोप्लास्ट में होता है. ऑलराइट, और एक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया, you know, it is present in plants as well as in animals. So that means in plants both type of phosphorylation takes place. But you know that in chloroplast what is there? Light reaction is occurring. Okay, with the presence of light food is being prepared. So that type of phosphorylation is known as photophosphorylation. Okay, when photo means light is involved in the formation of ATP, that type is called as photophosphorylation. all right, now see, ATP बनता कैसे? I told you yesterday also that ADP, adenosine diphosphate, when combines with one molecule of phosphate it forms ATP, adenosine triphosphate. okay, in the presence of light, तो जब लाइट की प्रेजेंस रहती है उस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. ओके, बट हेयर द एक्चुअल थिंग इज दैट ATP ऐसे ही नहीं बन जाता है. ओके, कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन कर जाएंगे और ATP बन जाएगा. नो, एक्चुअली फॉर दिस कॉम्बिनेशन ना, एक्चुअली दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. एंडो मीन्स व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ओके, सो एनर्जी बाहर से जब मिलेगी, ओके, फॉर दीज टू ओनली देन इट विल फॉर्म द ATP, अदरवाइज ये नहीं बनाएंगे. तो वो जो एनर्जी बाहर से मिलनी है वो कहाँ से आती है? वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको मैं बताऊंगी. ओके, सो ऐसे ही नहीं बनेगा ATP व्हेन द
energy is the requirement of the energy is fulfilled only then that ATP is produced. Okay, so itna aap samajh lo. Now see, this photophosphorylation means in the presence of the light, two types of phosphorylations are there. Okay, one is non-cyclic PP को मैंने शॉर्ट में लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है. PP means photophosphorylation. Okay, आप पूरा लिख सकते हो. And the second is cyclic photophosphorylation. Now see friends, don't get confused. अभी ये क्या इतने difficult words बार बार मैम बताती रहती है. Okay, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं. ओके, वो क्या चीज़ थी? वो था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कैन यू सी दिस? हमने ये किया था ना येस्टरडे. ओके, व्हाट वाज दैट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वी हैव टू फोटो सिस्टम्स, PS2, PS1. ओके, देन energy or light photons come here, they are excited, electrons gets transferred from one to another intermediate, then reaches to PS1, like that. Okay, so what is this actually? This is the phosphorylation. Why it is phosphorylation? Photophosphorylation, ATP is produced here. Okay, so this type of phosphorylation is called as non-cyclic. Cycle क्या होता है? एक जहाँ से शुरू वहीं खत्म, that is a cycle, right? So, but यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ से it is starting from here. Is it finishing here? No, it is going towards this, and then the electrons are used up in this PS1. Okay, so that means this is non-cyclic. So इसको आप electron transport chain भी बोलते हैं, and it is also called as non-cyclic photophosphorylation. Okay, is this clear? All right. Now, then we have cyclic photophosphorylation. Cyclic means when it starts from here and ends here. Okay, that means that makes a cycle. There is a simple difference, and see, these two are really very much important. You have to learn, you have to study the flow chart carefully, and even the difference. Sometimes question comes like differentiate between non-cyclic and cyclic photophosphorylation, so you have to study it in detail. Non-cyclic में क्या हो रहा है? You have already studied yesterday that PS1 and PS2 photosystems are involved. Okay, and there what two products are formed? ATP and NADPH. Okay, and the third thing here to be noted that this non-cyclic photophosphorylation occurred where? Membrane of grana. I told you yesterday that this is grana piled, and every grana is made up of one thylakoid. So this is the site of non-cyclic photophosphorylation. All right, this is about non-cyclic. Whereas cyclic photophosphorylation, first of all, the important thing here, we have only one system. Yes, this is the main difference. Okay, इसमें सिर्फ photo system 1 involved होता है, that means 700 वाला. Okay, cyclic flow of electrons जहाँ से शुरू वहाँ पर एंड कर रहा है. ओके, स्ट्रोमल लैमेले, द एक्चुअल साइट इज नॉट थाइलाकॉइड बट दिस लैमेले, द कनेक्शन बिटवीन टू ग्रेनास. Are you getting this? Okay, this is the site of the cyclic photophosphorylation. ये लैमेले में होता है, ये ग्रेना में नहीं होता है. ओके, एंड हेयर ATP and NADPH नहीं, बल्कि only ATP is formed. That is the difference. Okay, नॉन साइक्लिक में तो NADPH भी बन रहा है, ATP भी बन रहा है, यू नो, बट हेयर ओनली ATP इज फॉर्मिंग, नो NADPH इज फॉर्म्ड हेयर. ओके, दिस इज एक्चुअली द cyclic photophosphorylation. Now I have made this diagram just to make you understand that what is the site of cyclic and what is the site of non-cyclic phosphorylation. Okay, you can see here this lamella is the site of cyclic. It lacks PS2. जो फोटो सिस्टम्स हमने कल किए थे PS1 एंड PS2, वो कहाँ होते हैं? ग्रेना में होते हैं, लैमेले में नहीं होता है PS2. इसमें सिर्फ क्या होता है? PS1 होता है. ओके, दैट इज अबाउट दिस. नाउ यू कैन सी द फ्लो चार्ट हेयर. दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर cyclic photophosphorylation. all right, so what happens here? सिंपल है, जैसे कल क्या था वैसा ही है, कुछ खास बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें. यू नो दैट दिस इज P700 और PS1. ओके, सो इन दिस PS1 sun's photon rays reaching here. okay, these are sharing, that light is absorbed and finally moves to this chlorophyll molecule, chlorophyll A. this gets excited. जब excite होता है तो क्या रिलीज करता है? 2 electrons रिलीज करता है, ये याद रखना है आपने. ठीक है, it releases 2 electrons. Then these 2 electrons are accepted by primary acceptor. all right, after that primary acceptor gives these 2 electrons to ferredoxin. you have to learn the name as such. okay, all these are the intermediates, I told you yesterday also. Then this ferredoxin releases and gives electrons to PQ, plastoquinone. okay, then 2 electrons
which are further given to cytochrome complex. Okay, then PC means plastocyanin. इसकी जो क्या बोलते हैं फुल फॉर्म जो है वो ऑलरेडी आप कल कर चुके हैं. ओके, सो इसको मैंने इसीलिए शॉर्ट में लिखा है. एंड देन PC gives the 2 electrons finally to the P700. Alright, ऐसा हुआ क्या कि इधर से गया और कहीं और ही जाकर चला गया? No, it again ended here. It started from here and ended here. That's why we call it a cyclic photophosphorylation. I hope you got the idea. Alright, now you can see here 2 times ATP is being formed. Okay, one where ferredoxin shares or takes that electron. Okay, what happens there? ADP and inorganic phosphate forms ATP, and one when cytochrome complex is it's taking the electron. Okay, यहाँ पर बन रहा है ATP और यहाँ पर ATP बन रहा है. So this point you have to note here. So this is about the cyclic photophosphorylation. Okay friends, so now next topic is chemiosmotic hypothesis. Now see, it is already given in your textbook also. Okay, chemiosmotic hypothesis is purely related to the phosphorylation, photophosphorylation. Okay, अभी जो हमने किया उससे ये directly connected है. वो क्यों connected है? It make you understand how ATP is synthesized. हमने वहाँ बड़े easily बना दिया कि हाँ ATP बन गया, but ATP इतने आसानी से नहीं बनता है. Okay, ATP बनाने के लिए further there is a long process which you are going to study in this hypothesis. So that's why listen it very much carefully. Now actually the ATP synthesis or formation of ATP, which is the energy currency, okay, that is related to the protein gradient. मतलब जब protein gradient, sorry not protein, proton, okay, जब proton gradient होता है तभी ATP बनता है. अभी proton gradient क्या फंडा हो गया? अब सुनो. You know that proton is what? Hydrogen positive. H positive ion is called as proton, right? अब when proton gradient is there, अब ये gradient क्या चीज़ होती है? To understand the term gradient, I'll give you a simple example. Suppose this is a membrane, कोई भी एक membrane है, okay? Suppose one substance, see this is A, okay? Substance A is present here in more quantity, okay? This is the outside of the membrane, this is the inside part of the membrane, and here amount of A is very much less. What will happen? You know, during the process of simple diffusion, the molecules or substances travels from higher to lower concentration, so it will automatically starts moving here. अब ये कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए, वो तब तक मूव करेगा. ओके, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्रोटोन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मीन्स जब कहीं डिफरेंस होता है बीच में, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो automatically the substances starts moving following the diffusion process. Alright, that is actually the gradient words meaning. Now here proton gradient का मतलब क्या हुआ कि जब प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन का concentration it is different in different membranes. अब how? I'll just tell you here. Suppose this is that chloroplast. Okay, you have already studied the diagram in detail. Inside this we have thylakoids, grana, lamellae, all the things. So this is so friends, this is actually the thylakoid. Okay, मैंने बताया था chloroplast होता है, उसके अंदर thylakoid होता है. Okay, so outside thylakoid we have matrix which is called as stroma. Okay, so you can see in the textbook also this is stroma everywhere, not only this side. अगर मैंने यहाँ लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि यही होगा. Okay, everywhere. Okay, that's why I have made arrows here. Now what happens actually? Hydrogen ions are present more in number in stroma. All right, hydrogen is more in stroma than inside thylakoid. So what will happen? Automatically hydrogen will start moving here. Okay, just because of this entering it will develop a gradient which is called as proton gradient. Okay, और वो कब तक रहेगा? जब तक difference उनमें कम ना हो जाए. Okay, जब यहाँ पर आ जाएंगे, so that is actually the proton gradient. So this is about the proton gradient. Now see, it's very important here to be noted that to understand this chemiosmotic hypothesis, or you can say proton gradient, this is a long flow chart or you can say a complex one. So आपको अच्छे से एक एक चीज़ देखनी है, आपको तभी समझ आएगा. All right, now what is actually I have made here?
if you can see, this is what thylakoid. Okay, this is a thylakoid. ये जो thylakoid हम बनाते हैं वो है. ये जो membrane है actually this is double layered, that's why I have made here double layers. Okay, don't get confused, this is the membrane. And I told you yesterday that inside what? It is lumen. Okay, inside क्या होता है thylakoid के? We have lumen. All right, so this thylakoid membrane, actually you know, I told you that inside the membrane this non-cyclic photophosphorylation is taking place. कल भी मैंने बताया था कि यहाँ membrane में ही वो क्या हो रहा है, electron transport chain हो रहा है. Okay, so that's why I have made here this electron transport chain again. Now see what happens actually here in this chemiosmotic process. जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है ना, ओके, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है एक्चुअली? सिंपली व्हेन हाइड्रोजन हैज टू मूव इनसाइड द thylakoid or inside the lumen. Okay, but this movement of protons into the lumen occurs by three ways. Three processes are there. Okay, and what are these three ways? That will be discussed here, so listen carefully. What will be the first way? अब हम करते हैं. अब वो क्या चीज़ है देखिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपने किया, PS2 इज देयर. ओके, पिगमेंट क्लोरोफिल ए. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आई टोल्ड यू दैट वाटर गेट्स स्प्लिट. ओके, वाटर स्प्लिट होता है इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन. ओके, सो एक तो ये फर्स्ट प्रोसेस है that hydrogen is entering the lumen. Okay, what is the main purpose of proton gradient? Just to increase the amount of hydrogen inside the lumen. Okay, so inside जो lumen में hydrogen है वो कम है, बाहर स्ट्रोमा में ज़्यादा है. Okay, so यहाँ पर हम उसको कैसे increase कर सकते हैं? एक step तो यही है, because of splitting hydrogens are formed inside the lumen. So this is 1. That's why I have made here 1. Okay, so इसका मतलब ये है कि इस तरह से भी hydrogen के amount increase कर सकते हैं हम lumen में. All right. अब देखिए, you know that in that cycle what happens? PS2, okay, its electrons are excited and moves to the primary acceptor, and after primary acceptor these electrons finally are taken by PQ. PQ means plastoquinone. Okay, now listen carefully. This plastoquinone actually इसका क्या फंडा है? अब जो ये क्विनोन है ये क्या करता है, जो स्ट्रोमा के हाइड्रोजन आइंस होते हैं, द हाइड्रोजन आइंस प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, ऑल राइट, इट takes up, okay, it has the ability to take up the hydrogen ions from the stroma. Okay, now when it takes up the hydrogen ion, अब देखिए प्लास्टोक्विनोन क्या ले रहा है बाहर से? हाइड्रोजन आयंस. इट इज टेकिंग हाइड्रोजन आयन along with the 2 electrons which are given by the primary acceptor. Okay, so what is happening, what is forming? I'll give you the reaction here to understand it. PQ, when it gets hydrogen, basically 2 hydrogen, okay, plus 2 electrons from here, what it forms? It forms PQH2. all right, this is the product which is formed here. You can see PQH2. okay, but this PQH2 is reversible. It is again changed into PQ. अब वो कैसे PQ change हो रहा है? Simply first of all तो आपको पता है electrons will not be retained by this. okay, ये electrons अपने पास नहीं रखेगा क्योंकि electron transport chain है. okay, उसको अपने electrons देने हैं next intermediate को. all right, so it will lose the electrons and it will give the electrons to cytochrome B6F. you just learn the name. okay, cytochrome complex होता है जिसमें B6F होता है. okay, so एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा क्योंकि ये किससे बना था? इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन से. all right, electrons it gave it to cytochrome complex. what about this? these hydrogen atoms which are, or hydrogen ions which are taken up by PQH2, these are then released inside the lumen. अब आप देखिए PQ ने क्या किया? It took that protons from outside the membrane, that is stroma, and then it released, while changing again to PQ, it released inside the lumen that hydrogen ions. okay, so ये क्या हो गया? वो second process हो गया, second way हो गया by which we can increase the amount of hydrogen ions inside the lumen. okay, all right, now after getting the electrons from PQH2, the cytochrome B65 again gives the electrons to PC. आप कर चुके हो plastocyanin, and then finally electrons reaches to PS1. okay, and now what happens? The third way how the
hydrogen ions will be added here is that आपको पता है then it will again get the light from the sun. Okay, it will excite, electron will be shifted to primary acceptor. Now what happens actually, this process occurs in the stroma. You know that stroma is having this NADP positive. This is actually what? This is coenzyme. Okay, this NADP plus, again what happens, it takes these electrons, along with that it captures the hydrogen ions from the stroma. You know that stroma is having hydrogen ions. Okay, so from the stroma, this NADP positive takes up the hydrogen ions. That's why I am making this arrow like this. It takes up the hydrogen as well as the electrons, and finally together they form. When it takes the hydrogen, it will become NADPH plus H positive. 2 H positive थे, एक H P के साथ जुड़ गया NADPH, and 1 H positive is remaining here. अब आपको I think clear हुआ, जो last time हमने yesterday we studied that NADPH is formed at last. Okay, non-cyclic में वो H कहाँ से आया? I think now you got the idea from here. इस तरह से भी क्या होता है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, वी कैन डेवलप दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट मीन्स accumulation of protons, okay, inside the lumen. So ये 3 ways थे by which we can increase the amount of protons inside the lumen. All right, now friends, अभी भी पिक्चर पूरी नहीं है. okay, पिक्चर तो अभी बाकी है. अब वो क्या है देखिए. अभी तो आपने सिर्फ ये पढ़ा कि हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज डेवलप्ड. नाउ व्हाट हैपन्स, एटीपी हम क्या कर रहे हैं, हमको एटीपी बनाना है. एटीपी कैसे बनेगा, एटीपी को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए. ओके, फॉर दैट व्हाट हैपन्स, सी यहाँ जगह नहीं थी. ओके, आई डोंट हैव स्पेस हेयर, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग हेयर, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है. ओके, हो क्या रहा है, हो रहा मेम्ब्रेन में ही है. यू कैन सी हेयर देयर इज एक्चुअली वन enzyme involved here, and that enzyme is actually called ATP synthase. ATP synthase is the enzyme which consists of these 2 parts. इसको आप coupling factor भी बोलते हो. Okay, it contains 2 parts. What are those parts? The first one is called as CFO. Okay, CFO, it is already given in your book. Okay, so you can आप उससे अच्छे से देख सकते हो. And the second part is CF1. These 2 parts are of this enzyme. अब ये एंजाइम क्या करेगा, ऑब्वियसली क्या करेगा, ये ADP को it will combine ADP with inorganic phosphate, okay, to form ATP. But ATP को बनाने के लिए I told you endothermic reaction है, it requires energy. From where does that energy comes? So listen, how will it come? अब देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन जब वहाँ से बाहर से इधर आ गया, it maintained the level. Now what is happening? अब the amount of hydrogen is becoming more here than outside the lumen. स्ट्रोमा में अब क्या हो गया है, स्ट्रोमा में H प्लस लेस हो गए हैं, यहाँ पर H प्लस मोर हो गए हैं. ओके, व्हाट विल हैपन नाउ टू कंपनसेट दिस लॉस, दीज विल अगेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ल्यूमन टू द स्ट्रोमा. ओके, सो सी, from first and second method by which protons are formed, they finally transfers through this coupling factor or through these CF4 and CF1 into the stroma. Okay, so ये इस तरह से transfer हो जाते हैं. By the transfer of this, what happens, energy is released. Okay, actually क्या हुआ है, when this proton gradient further develops, energy is released. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो difference था उसको maintain करने के लिए, यहाँ ज़्यादा था यहाँ कम, so the hydrogen transferred here. Because of this difference, what happens, energy is released, and that energy is utilized in this reaction to form ATP. Yes, this is the actual funda. Okay, ATP formed here because it requires energy which is released when this hydrogen transfers again from the lumen to the stroma through this membrane channel. So that means ATP synthase acting as a channel just to transport hydrogens from the lumen to the stroma. Okay, so इस तरह से एनर्जी रिलीज होती है, ATP बनता है. This whole process together is called as chemiosmotic hypothesis. Okay, this is the process by which we understand that how ATP is formed in the reaction during
फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हमने क्या किया अभी तक, फोटोसिंथेसिस होता है, एटीपी बनता है, ओके, साथ में NADPH बनता है इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विच इज अकरिंग इन द thylakoid membrane. Along with that, you know that lamellae cyclic photophosphorylation is also taking place, all right, but the question is still there, how the ATP is produced. So that is produced because of this proton gradient, okay, movement from stroma to lumen, and then movement from lumen to stroma, energy is released and ATP is being formed, okay. And you all also studied the three ways how the proton gradient is developed or how hydrogen concentration is increased inside the lumen. So this is the chemoosmotic hypothesis. Friends, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये एक बार देखने से समझ नहीं आएगा. You have to watch this video again and again just to understand the concept. So I hope मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर सच में इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे देखकर इग्नोर मत कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. गुड बाय.